Good morning students. Today we are going to discuss about cholinergic agents. Cholinergic agents क्या है हमारे इसमें आ जाता है एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है विच आल्सो रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द प्री गैंग्लियोनिक्स ऑफ सिंपैथेटिक प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स and also at the neuromuscular junctions in voluntary systems. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. एनर्जी में था एड्रेनालिन, इसमें है एसिटाइलकोलिन न्यूरो हार्मोन्स. एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज और स्टोर्स एट द नर्व एंडिंग्स. It acts as a transmitter of impulse through the parasympathetic systems and also change the permeability of sodium ion or potassium ions which are act as a carrier of bioelectric currents. So these are divided into two parts. The effect of stimulation on cholinergic systems are basically divided into two parts, muscarinic or nicotinic receptors. The effect of acetylcholines includes inhibition of cardiac activity, stimulation of smooth muscles of gastric tract, increase peristalsis, peripheral vasodilation, increase salivation or secretion of salivary glands. So the stimulation of skeletal muscles, blockage of autonomic ganglia, neuromuscular junctions, these are the main actions of acetylcholines which are similar to the effect of nicotine. So that are known as nicotinic actions. So compounds which show same action like acetylcholine or produce the effect of stimulation of parasympathetic nerves, these are known as cholinergics or parasympathomimetics agents. The another category of drug that are known as anticholinesterase which inhibits the enzyme cholinesterase and produced action similar to those of acetylcholine. So the enzyme cholinesterase hydrolyze acetylcholine to choline and acetic acid which are inactive compounds. So the drugs which inhibits the enzyme cholinesterase, these are known as anticholinesterase agents. So these drugs can cause the accumulation of acetylcholine at the receptor site or produce effects that are similar to the stimulation of cholinergic systems. So in general, the cholinergic agents are clinically used in different conditions like reduced intraocular pressure in glaucoma, parastylitic illness, post-operative urinary retentions, myasthenia gravis to give relief from muscular weakness. There are different drugs which are includes in cholinergic agents. First one is acetylcholine. एसिटाइलकोलिन क्लोराइड में क्या है 2-एसिटो इथाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड. इट्स ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करता है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, न्यूट्रल टू लिटमस. इट हैज़ टू बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर और इन ए कूल प्लेस. इट इज़ नॉट यूज क्लिनिकली because it has some side effect. Next is methacholine. Methacholine में क्या है 2-एसिटो ऑक्सीप्रोपाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड. It's also a colorless crystalline powder, delicent in nature, very soluble in water and alcohol, also acidic to litmus. It's also stored in airtight containers. It's more stable than acetylcholine. Also used for cardiac disorder like tachycardia. Tachycardia means कि heart rate increased. Peripheral vascular disease, renal disease, constipation, urinary retention. Also used for the treatment of myasthenia gravis. So usual dose is 10 to 20 mg. It should not be given IV. Next one is carbachol. Carbachol में क्या है कार्बामाइल कोलिन क्लोराइड. Next, its uses, its white crystalline powder with an amine-like odor, hygroscopic, moisture absorb, insoluble in water but insoluble in ether and chloroform. So it stimulates the urinary bladder. It's used for the treatment of urinary retention or intestinal paresis.
Also reduce intraocular tension of glaucoma. Usual dose 0.75 to 1.5. नेक्स्ट एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट. एंटीकोलिनेस्टरेज क्या होते हैं? जो एंजाइम कोलिनेस्टरेज होता है उसको इनहिबिट करती हैं जो ड्रग्स. दीज आर नोन एज एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट्स. सो द ड्रग्स विच इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द साइट ऑफ एक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम कोलिनेस्टरेज. कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं. दीज आर नोन एज एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट. फर्स्ट वन इज फिजियोस्टिगामीन. इसमें आ जाती हैं फिजियोस्टिगामीन, नियोस्टिगामीन, पाइरिडोस्टिगामीन. फर्स्ट वन इज फिजियोस्टिगामीन सैलिसिलेट, दैट इज ए एल्केलॉइड्स. फिजियोस्टिगामीन क्या है? एल्केलॉइड है. सैलिसिलेट सॉल्ट ऑफ एल्केलॉइड फिजियोस्टिगामीन mainly obtained from the dry ripe seeds of Physiostigma venusum. So it's a white yellowish powder soluble in water and chloroform, also neutral to litmus on exposure to air, that show red color. So store in airtight container or resistance to light, that can sterilized by filtration, incompatible with alkaloid reagents. Next, its uses. It has stimulatory action on bowel, so cause more secretion from the glands and more effect on BP. So only 1% solution is used for glaucoma. Also in case of depressed intestinal motilities. Next is neostigamine. Neostigamine में है 3-dimethyl carbamyloxy trimethyl aniline bromides. Next is properties. It's a white crystalline powder, bitter taste, freely soluble in water and alcohol. Also used in the form of tablets, mainly used for the treatment of myasthenia gravis or post-anesthetic intestinal paralysis or diagnostic test for pregnancy. Usual dose 15 to 30 mg. Next neostigamine. Neostigamine methyl sulfate. इसमें आ जाता है 3-methyl carbamyloxy trimethylinium methyl sulfates. It's a white crystalline powder, bitter taste, soluble in water but less soluble in alcohol, hygroscopic. So use in the form of injections or in parenteral form. It's mainly used in parenteral form for the treatment of paralytic illness, operative urinary retention. Also used in diagnostic purpose for the treatment of myasthenia gravis. Usual dose 0.5 to 2 mg. नेक्स्ट पाइरिडोस्टिगामीन ब्रोमाइड. इसमें आ जाता है 3-dimethyl carbamyloxy 1-methyl pyridinium bromide. It's a white crystalline powder, characteristics odor or delinquent in nature, freely soluble in water and alcohol. It should be stored in airtight container. Its solutions are sterilized by autoclave and also by filtration methods, so it's less toxic than neostigamines. Next, its uses. It's mainly used in myasthenia gravis. It's used in the form of injection or tablet. Usual dose 60 to 240 mg according to the requirement of patient, or in injection 1 to 5 mg. नेक्स्ट इकोथायोपेट आयोडाइड. इसमें आ जाता है 2-डाइथॉक्सी फॉस्फोनाइल थायोथाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम आयोडाइड्स. इट्स ए वाइट पाउडर, हेलिशियस ऑर्डर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, लेस इन अल्कोहल, लेस soluble in alcohol, or mainly store in airtight container, protect from the light. So usual temperature 2 to 8 degrees Celsius. It's mainly used topically in the treatment of glaucoma. Next, hydrophonium chloride. hydrophonium chloride में क्या है? ethyl 3-hydroxyphenyl dimethyl ammonium chlorides. It's also a anticholinesterase drug. It's a white crystalline powder, odorless, freely soluble in water and alcohol, insoluble in chloroform. It can also use as a diagnostic agent for myasthenia gravis. ये भी diagnostic purpose के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट, आल्सो स्टेबलाइज्ड और abolish the neuromuscular paralysis caused by D. tuberculin.
So usual dose is 10 mg given to the patients. First 2 mg is given IV, then 8 mg dose is given. Next, the drugs acting directly on the cells, जो directly cells के ऊपर act करती हैं, that are pilocarpine nitrates. That is alkaloids. Nitrates of alkaloids pilocarpine obtained from the leaves of Pilocarpus microphyllus and other species Pilocarpus. इसमें होता है colorless crystals with bitter taste of slight odor, that is soluble in water, alcohol, insoluble in chloroform or ethers. Its aqueous solution also sterilized by filtration or by autoclave methods. It's stored in a tight, light resistance containers. Next, its uses: it stimulates the smooth muscles or glands and also act on the cholinergic nerves. So used topically to the conjunctiva or to act as a miotics in glaucoma. Usual dose is 0.5 to 2%. Next is antidotes. Antidotes for cholinesterase inhibitor. एंटीडोट्स कहते हैं जो हम पॉइजनिंग के लिए, जब ओवरडोज होती है किसी भी ड्रग की, किसी भी केमिकल की बॉडी में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एंटीडोट्स. उसी तरह एंटीडोट्स है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर के लिए. जब बॉडी में एक्सेस अमाउंट में कोलिनेस्टरेज होगा तो उसके लिए हम एंटीडोट यूज़ करेंगे. एंटीडोट फॉर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर पैलिडॉक्सिन क्लोराइड्स. इट्स आल्सो नोन एज 2PAM क्लोराइड्स. इसमें क्या होता है? 2-हाइड्रोक्सी इनोमिथाइल 1-मिथाइल पैराडीनियम क्लोराइड्स. इट्स ए पेल येलोइश crystalline powder freely soluble in water. So usual dose 1 to 2 gram of 5% solution as a injection. So IV dose is given mainly for the treatment of poisoning effect of drug. जो ड्रग से पॉइजनिंग हुई है लाइक नियोस्टिगामीन है, पाइरिडोस्टिगामीन है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसकी डोज यूज़ करेंगे 1 to 2 ग्राम. थैंक यू.